अम, हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार. Hello and welcome to My BillBook Live. I see that we already have some viewers here. Uh, Varma Technical, hello sir. Sir, great that you could join us today. AK5 Tech, hello sir. Very glad sir that you could be with us. Football Gear, Sandeep Jain, DS Gupta, Satish Kar, great sir that all of you could join. We'll just wait for some more viewers to join and then we can start with our discussion. We'll also be taking questions. Manish Shukla sir is here. Great sir. Great that you're here with us again. Um, Great to have all of our viewers with us. Shaji Panchali ji is asking how I am. Sir, I'm great. Hope that you're doing well as well. Let me just check how many viewers with us. Okay, cool. So we have around 80 viewers with us. So we can start. Um, welcome to all of our viewers today. We are going to discuss inventory management in My Bill Book. Um, Yes, sir. We've also I've seen a comment that says, "Are we going to discuss uh, results for the contest?" Yes, we'll also be announcing winners for the contest. So please stay tuned to the entire live session. At the end of the session, we'll tell you who the three winners are. We'll also be taking all of your questions. So please keep writing your questions in the comments. So I'll start with our demo. So what we're going to discuss today is इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन माई बिल बुक. तो हम आज डिस्कस करेंगे कि आप अपना स्टॉक कैसे मैनेज कर सकते हैं माई बिल बुक में. सो देर आर अ कपल ऑफ वेज विथ विच यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर इन्वेंट्री. और हम ये जानते हैं कि हर बिजनेस में एक अलग अलग तरीका होता है बिजनेस करने का. जैसे कुछ बिजनेसेस में वो हमेशा परचेज वाउचर बनाते हैं और वो उन परचेज वाउचर्स के साथ ही अपनी सारी अकाउंटिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि उसके साथ उनकी इन्वेंट्री मैनेज हो. We also know that there are some businesses who only make sales and they use My BillBook primarily for making sales. So, for such businesses, it's important that they adjust stock from a different option because they're not making purchase vouchers, so their stock isn't increasing in the normal way. So, we'll discuss both of these approaches today. And if there are any questions related to inventory management in general or any other questions that I see in the comments, we'll be taking those as well. So, one of the main things that I want to discuss, I want to tell all of our viewers is that unlike other apps, whenever you make a voucher in My BillBook, जब भी आप My BillBook में voucher बनाते हैं, तो जितने भी आप क्वांटिटी उसमें डालते हैं, वो क्वांटिटी आपकी इन्वेंट्री में भी चेंज हो जाती है. तो इससे मेरा मतलब क्या है कि लेट्स से आई मेक अ बिल. ठीक है, आई मेक अ बिल विथ दिस पार्टी कॉल्ड दीप. ओके, एंड लेट्स से आई ऐड आइटम्स टू इट एंड यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल आइटम है एंड द स्टॉक ऑफ द सैम्पल आइटम इज़ 123. So what I'm going to do is I'm going to set the stock for this item in this invoice to 23. So what I'm doing is I'm creating an invoice where I am adding 23 units of sample item and you can see that the existing stock is 123 boxes. Now when I finish this bill, you can confirm that there are 23 items here. You will see that the sample item in the form you had seen that it had 123 boxes. Now it has only 100 boxes. So what that means is जब भी आप voucher बनाते हैं, whenever you make a voucher, whatever quantity you enter in that voucher, that also reflects in your inventory. So आपको separately जाकर inventory manage करने की ज़रूरत नहीं. You don't have to go and separately update your inventory. As in when you create vouchers, your inventory will get updated accordingly. Now this happens both for sales vouchers and also for purchase vouchers. Whenever you make a sale, at that time your inventory will decrease for that particular item. Whenever you make a purchase, it will increase. Now we also understand that some businesses don't make purchase vouchers with My BillBook. So what we're doing for them is, um, let's say I have this item called Britannia Cakes Yummy Fruit 45 grams. So we know that this stock is minus two pieces, which is wrong, which means that new stock has come in which hasn't been added. तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये जो सेटिंग्स वाला बटन है राइट, आप उस पर प्रेस करिए. इट विल गिव यू द ऑप्शन टू ऐड स्टॉक एंड रिमूव स्टॉक. नाउ इफ आई प्रेस ऑन ऐड स्टॉक, it allows me to enter as much new stock as I have added. So let's say I add 12 new pieces of this and you can also see कि यहाँ पे हम date भी लिखते हैं, तो you can keep track of when new stock was added and you can also add any remarks that you want to add along with this information. Let's say I say I got this from Gitanjali Traders. Okay,
uh, and now I save it. So if I go inside Britannia cakes, you will see that this entry has been created. My stock has been updated. My stock was previously minus 2 pieces, now it's 10 pieces because I added 12 more pieces. And whatever remarks I've written, they show up here. तो उससे क्या होता है कि आप जो भी अपना स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, लेट्स से आप परचेस वाउचर्स नहीं बना रहे, बट आप फिर भी नया स्टॉक ले रहे हो और आप चाहते हैं कि आपकी स्टॉक मैनेजमेंट, आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो सही से हो पाए, तो वो माई बिल बुक में ऐसे सही से हो सकती है. लेट्स से बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट accident, your stock goes waste, right? In that case, you want to reduce the amount of stock you have, so then you can use this minus stock option. You can also access it from the outside. आप उसी ऑप्शन पे प्रेस करके रिड्यूस स्टॉक प्रेस कर सकते हैं, and then you can reduce whatever quantities of stock you want to reduce. So what this does is this ensures that your stock levels will always be correct, irrespective of if you're making purchase vouchers or not. There are other aspects to this also. There are reports which you can use to track your stock timeline. But since there are a lot of questions, I'll quickly take some of the questions that we have. Uh, Great to have so many viewers with us today. Uh, Football gear says English, please. Yes, sir. We'll try to have a healthy balance of both. If you have any question that you want answered in English, please ask the questions in English. अगर आप हिंदी में कोई सवाल का जवाब चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हिंदी में सवाल पूछिए, मैं फिर हिंदी में जवाब दे दूँगा. ठीक है. राइट, माधव पटेल हैज़ अ क्वेश्चन. बैकअप कहाँ पर होगा सर? तो सर, माई बिल बुक का बैकअप हम हमारे सर्वर पे रखते हैं. हम ये चाहते हैं कि सॉरी, किसी भी केस में, लेट्स से अगर आपका आप फ़ोन चेंज कर लेते हैं या किसी दुर्घटना की वजह से आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो उस केस में आपका डेटा सेफ़ रहे, इसलिए हम आपका सारा डेटा सर्वर पे बैकअप रखते हैं. इससे क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन को कुछ भी हो जाता है, तो आपका डेटा हमेशा बैकअप होगा. ऑल्सो हम हमेशा 24/7 ऑटो बैकअप करते हैं. तो इससे मेरा मतलब क्या है कि बाकी आपसे आपने देखा होगा कि आपको खुद से बैकअप करना पड़ता है. तो लेट्स से मैंने आज के दिन की इन्वॉइसेस बना लिए, इन्वेंट्री बना ली, और रात को मैं बैकअप लेना भूल गया, और उसके बाद लेट्स से अगर मैं अपना फ़ोन चेंज कर लेता हूँ, तो उस केस में मेरे उस दिन के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बैकअप नहीं होंगे. तो टू इंश्योर कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली 24/7 बैकअप करते हैं. तो जैसे ही आप कोई भी वाउचर बनाते हैं, वो हम बैकअप करने की कोशिश कर लेते हैं. तो कुछ कुछ केसेस में बैकअप नहीं होता, लेट्स से कभी कभी इंटरनेट नहीं होता, तो उस केस में आपको वाउचर के ऊपर दिख जाएगा कि वो क्रिएटेड ऑफलाइन कहता है. यानी कि अगर आप ऑफलाइन इन्वॉइस बनाते हो और तब तक वो बैकअप नहीं हुआ है, वो हमारे सर्वर के साथ सिंक नहीं हुआ है, उस केस में हम आपको बता देते हैं कि अभी तक ये वाउचर ऑफलाइन ही है, इसको अभी तक बैकअप किया नहीं गया है. बट हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर आप ऑफलाइन भी बनाएं या आप ऑनलाइन भी बनाएं, हम हर चीज़ को बैकअप करने की कोशिश कर लें. Wholesale only Albila says, I want Tamil speaker. Sir, at this moment in time, we're only doing the live in English and Hindi. But going forward, as we get more and more businesses from regional languages, we'll also be introducing more features, more videos in the app in regional languages. We might also have lives in regional languages going forward. So please stay tuned with us, sir. Uh, Ganga Abhi has the same question, sir. We currently only do the live in English and Hindi, but going forward, as we get more and more businesses from regional languages, we'll also be doing lives in those languages. Mm, Football Gear has a question that goes, "Sir, please add beep sound during barcode scanning." Sir, that's something we can definitely do. I understand this is something that happens with the existing barcode guns. When you point the gun and the moment the barcode gets scanned, you hear the beep so that you don't need to check if it has been added. It's definitely a great suggestion, and I'll talk to our engineers about this. We can definitely add something like this. Sanjay Kumar Sahu has a question that goes, please add mobile handset stock as IMEI and color wise. So, sir, what you're essentially referring to is you want to keep track of, let's say, if you sell iPhones, then how many silver iPhones you have and how many black iPhones you have. So, one of the ways you can do this is whenever you create an item, like let's say I create an item for iPhone. Uh, so you'll see that a lot of these items already exist in our item library, so you can just choose from there. So let's say I choose an 8 plus iPhone. So what I'd recommend you to do is if you want to keep track of the variant or the color of that particular model, you can just write it here itself, black, and and save it. So
what this enables you to do is, let's say you have a customer who says he wants to buy a black iPhone. You can just directly search for black, and you will find all of the devices that you have in black. So this way you can keep track of any particular commodity like an iPhone, but also a separate variant of it. And now, because we've created a separate item for this, you will also see a separate report for all black iPhones. So let's say tomorrow you want to analyze if having a silver iPhone in stock is better, or is better than having a black iPhone. So you can just create separate items for each variant and then look at the reports of the sales, and then you'll be able to understand ki if a silver iPhone is faster selling or if a black iPhone is faster selling, and which type of iPhone you should keep in your stock. So that is definitely something that you can try. As uh, as for IMEI, so sir, as you understand, IMEI is separate for every phone, for every commodity, for every unit that you sell, right? So in that case, what you will want to do is, whenever you are making an invoice, at that time you will want to convey to the customer, or you will want to keep it for bookkeeping purposes later on, that this model had this IMEI and now it's been sold. So what you can do is, I'll just quickly create an invoice, and I'll show you how you can add an additional field, and in that additional field you can note down the IMEI. So I'll go to settings here, and I'll select show item fields in invoice. Okay. So right now it's telling me I don't have any additional item fields, so I'll just quickly create one. Uh, and it's asking me to add now a custom field. So I'll make this custom field called IMEI. Okay, and I'll save it. I'll go back, and now it's switched on. So what this means essentially is there is going to be a new column called IMEI in the items table. Now I'm going to quickly make a party deep, and I'll add this item iPhone. Right. So once I've added iPhone, I see this option that says edit. Now what I'm going to do is I'm going to press on edit, and it's going to open a set of options that lets me change the price and other details. So I'm going to select other details here, and now it's asking me to enter the IMEI. So here you can enter whatever the IMEI of the device is, and it will show up on your invoice. So here your IMEI has come. So like this, you can keep track of what IMEI numbers you've sold with the invoice. I hope that answers your question, sir. If you have any other doubts, please let us know in the comments. We'll definitely try to answer them. Mm, okay. Prithviraj Bafana says JRD Communication. Hello, sir. Sir, great that you could be with us. Um, सहीम भुंगरा कह रहे मुझे तो जवाब दे. हाँ सर, आप सवाल पूछिए, मैं बताता हूँ आपको. पवन ज्ञाननी sir says, sir, please do feature of GST on final transaction. So, sir, we have an option for setting GST on any item. So, let's say you're selling a particular item that belongs to a particular HSN code, and that has its own GST rate, right? 3%, 5%, 12%. So, if you add that tax rate in the, right, if you go to items, and at the time of creating an item, if you add a tax rate, yeah, here you can set 5% GST. So what this does is, whenever you're making an invoice and you add this particular item, let's say we'll just take the last example only. We'll create another iPhone, let's say an iPhone 7. So whenever you make a bill with this item, iPhone 7, there'll be a GST of 18%. So with this, you can add GST as per the items. Um, if there's any other kind of GST that you're referring to when you say final transaction, so sir, please let us know so that we can understand what you're referring to, and then we'll try to incorporate that in the app. Uh, Real Math says, good afternoon, sir. Sir, good afternoon to you as well. Great you could be with us. Um, Kiran Kumar Vasanti says, I am unable to import from Vyapar backup. Please help. Right. So, sir, this is a bug on our end, that our Vyapar backup feature has some issues, and our engineers are currently working on it as we speak. So, going forward, we'll try to fix it, and our aim is to fix it as soon as next week itself. So, the moment we release an update which fixes the Vyapar import issue, we'll definitely tell you, sir, and then you'll be able to import all of your existing transactions, all of your existing items from Vyapar, and continue billing with My BillBook. सतीश गर्ग कह रहे हैं सेल ऑर्डर आइटम वाइज समरी. राइट. तो सर, हमारे पास एक फीचर है जो है कोटेशन, जो इसेंशली सेल ऑर्डर की तरह ही होता है कि
आपने उसको इनवॉइस में अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है, वो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, बट आपका एक सेल ऑर्डर है वो, जहाँ पे आप बस बता रहे कि अगर हम इनवॉइस बनाएंगे तो वैसे दिखेगा, ये रेट पे अग्री करेंगे आप। तो करंटली हमारे पास सेल ऑर्डर या कोटेशन की कोई रिपोर्ट नहीं है। राइट नाउ वी ओनली हैव रिपोर्ट्स फॉर सेल्स, सो लेट्स से यू गो टू एनालिसिस विच इज़ essentially रिपोर्ट्स ओनली। तो वी आर करंटली यूजिंग अ कपल ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, तो मे बी आपके ऐप में यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखा होगा, बट इट्स द सेम फीचर। अगर आप रिपोर्ट से एनालिसिस के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल समरी का ऑप्शन है। तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि आपकी कौन सी इनवॉइस में कितनी सेल हुई है। इसके साथ ही राइट, आइटम सेल समरी में आप देख सकते हैं कि कौन सी आइटम की कितनी सेल हुई है। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि जैसे मेरा यहाँ पे फ़िल्टर सेट है दिस वीक के लिए, तो 7 दिसंबर और 13 दिसंबर के बीच में मेरी कौन सी आइटम्स की सेल हुई है और वो कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है। तो सर आप सेल की आइटम वाइज समरी देख सकते हैं। प्रदीप कुमार का क्वेश्चन है, ऑर्डर करने के टाइम ही पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। तो सर मैं समझ रहा हूँ, आप उस टाइप की बिज़नेस की बात करें जहाँ पे लेट्स से मैंने सेल कर दी और मुझे हाथों हाथ ही पैसे मिल गए। तो हमारे पास पर माई बिल बुक में उसका ऑप्शन है। तो आप क्या करिए, प्लस बिल स्लैश इनवॉइस पे प्रेस करिए और आप किसी पार्टी के साथ बिल बनाएंगे, ठीक है। और आप कुछ आइटम्स ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे आइटम्स ऐड कर लिए और अब मेरे बिल की अमाउंट हो गई 47,000, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐड मोर डिटेल्स पे प्रेस करूँगा, ये जो लेफ्ट में बटन है वो। अब ऐड मोर डिटेल्स पे प्रेस करते ही आपको इस इनवॉइस में पार्टी नेम और आइटम्स के अलावा अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो इसके बारे में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आप क्या करिए, नीचे कैश रिसीव्ड का बटन होता है, आप उस पर प्रेस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप इनवॉइस के साथ ही कैश रिसीव कर सकते हैं। तो लेट्स से आप रिटेल में काम करते हैं और आपने आपके कस्टमर को दे दिया बिल और आपने सारे आइटम्स भी दे दिए और वो आपको हाथों हाथ ही पैसे दे देते हैं। तो आप यहाँ पे कैश रिसीव का बटन प्रेस करिए, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। लेट्स से आपको पूरी अमाउंट नहीं मिल रही तो आप वो भी एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर 47,000 की जगह सिर्फ 35,000 मिल रहे हैं तो आप वैसे 35,000 लिख सकते हो, आपको बता देगा कि कितना आउटस्टैंडिंग, और आप सेव कर दीजिए। तो जब आप इनवॉइस भी बनाएंगे ना तो यहाँ पे दिख जाएगा कि जो आपकी इनवॉइस है 47,000 की बनी है, जो आपकी रिसीव्ड अमाउंट है वो इतनी है, आपने इतने कैश कलेक्ट कर लिया और इतना बचा है। और अगर आप डन करते हैं तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा कि देखिए इनवॉइस 47,000 की है, बट जो अनपेड अमाउंट है वो 12,000 है। ठीक है। वन थिंग, अंशुमन गोयल सर हैज़ a suggestion that goes, one thing that you need to add more fields in description of the product. एक मिनट। Sir, I'll just quickly open items and we'll see uh, how you can add more information in the product. So let's say I create a new item, and whenever I create a new item, let's say this is a Parle G product, okay, right. तो the information that we have seen businesses add is, एक तो वो प्राइस के बारे में information डालते हैं। So you can enter information like what the MRP is, what the wholesale price is, at what quantity you want to sell at wholesale. So if these things aren't switched on, sir, you can just go to settings and switch it on from here. So that's one. Let's say you want to add more fields that describe the product, right? So you go to other, और other के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक remark enter कर सकते हैं। तो whatever description you enter there, you can sort of use it to refer what the product is about. However, let's say you feel कि even this information isn't enough, and we've seen a lot of customers tell us that they sell one item but in different sizes. So you can add an extra column in the invoice. So go to settings at the top right here, select additional item columns, and then you add an additional custom field. Sorry, you add an additional custom field that says something like size, ठीक है, or you save it. Now you will see an option for size here. So whenever you want to add extra information about the item, you can just create an additional field for it, or you can just add it in the remarks here. ठीक है. So moving ahead, सहीम बुंगरा सेज़ एसएमएस की फैसिलिटी है क्या? तो सर हाँ, हमारे पास एसएमएस की फैसिलिटी है। आई जस्ट क्विकली शो ये चलती है कैसे। आप क्या करिए, आप मोर में जाइए और मोर के अंदर ऐप सेटिंग्स में जाइए, और ऐप सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कहता है ऑटोमेटिक एसएमएस। तो ऑटोमेटिक एसएमएस से क्या होता है, जब भी आप इनवॉइस बनाते हैं, आप कोई परचेज़ करते हैं,
तो जिस भी पार्टी के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है उनको एक एसएमएस चले जाएगा। तो लेट्स से मैं आपके साथ एक सेल करता हूँ और मैं अपने माई बिल बुक ऐप में नोट कर लेता हूँ कि मैंने सेल किया है, तो एक आपको एसएमएस आ जाएगा जो बताएगा कि आपने इस पार्टी के साथ इतनी सेल की है, ये सेल की अमाउंट है और ये आपका आउटस्टैंडिंग है। और उसके नीचे ही उनको एक लिंक होगी जिस लिंक पे उनको उस सेल का इन्वॉइस दिख जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपको ट्रांसपेरेंसी रखने में बहुत फ़ायदा होगा आपके कस्टमर्स के साथ कि आपने कितने का सेल किया है और कितना आउटस्टैंडिंग है ओवरऑल। इसके साथ ही हमारे पास ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर्स भी है। तो अगर आप पेमेंट रिमाइंडर्स टू पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप आपकी इनवॉइस की ड्यू डेट के दिन पर आपकी पार्टी को बताएंगे कि इतना पेमेंट बाकी तो प्लीज़ पे कर दीजिए। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि करंटली डिफ़ॉल्ट जब भी आपको इनवॉइस बनाते हैं जहाँ पे आप रिसीव्ड अमाउंट नहीं लेते या जो अनपेड होती है, तो वहाँ पे 7 दिन का ड्यू डेट होता है। इससे मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं आज कोई इनवॉइस बनाता हूँ और उसका पेंडिंग है पेमेंट, तो 7 दिन बाद वो इनवॉइस ड्यू हो जाएगी और 7 दिन बाद आपकी पार्टी को एसएमएस चला जाएगा कि इतनी पेमेंट ड्यू है तो आप प्लीज़ पे कर दीजिए। तो ये एसएमएस तब जाएगा अगर आप यहाँ पे ड्यू डेट के ऑप्शन को ऑन करते हैं। सिमिलरली हमारे पास प्री ड्यू डेट भी है, तो प्री ड्यू डेट क्या करता है, ड्यू डेट के 3 दिन पहले भेजता है वो एसएमएस। तो अगर आप इसे ऑन करते हैं तो इनवॉइस ड्यू होने के 3 दिन पहले ये एसएमएस चला जाएगा आपकी पार्टी को। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई एसएमएस जाए। सिमिलरली हमने पेमेंट रिमाइंडर्स टू सेल्फ भी बना रखा है। तो इससे क्या होता है, हम आपको याद दिलाते हैं कि आपको इस इनवॉइस के लिए पेमेंट कलेक्ट करना है। तो अगर आप लेट्स से चाहते हैं कि हम आपको रिमाइंड कराएं ना कि आपकी पार्टी को, ताकि आप लेट्स से फिर कॉल पे आके डिस्कस कर लें, तो उस केस में आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हैं। आपको फिर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ये इनवॉइस ड्यू है। या सिमिलरली परचेज़ के लिए भी कि लेट्स से आपको कुछ अमाउंट पे करनी है जो अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो उस केस में हम आपको बता देंगे कि आपके इस परचेज़ का पेमेंट आज ड्यू है तो आप पे कर दीजिए। ठीक है। दिलीप राय सेज प्लीज़ सिलेक्ट इंटरनेट सर्विस रिलेटेड प्लान। So, sir, right now we have one premium plan which lets you remove My BillBook logo from your invoices. Having said that, 80 to 90% of all features in My BillBook are free. So you can access all the reports that you want. You can access all the themes that you want. You can access all the features related to um, expenses, quotation, inventory management. So all of these things are in the free plan only. Uh, if however you want to, let's say, add your staff to My BillBook, or let's say you want to remove the My BillBook logo that comes at the bottom of your invoice, only in that case you have to pay. So we only have one plan for that. I hope that is what you referred to when you said plan. If that doesn't answer your question, sir, please let us know. We'd love to understand what you mean by that, and we'll try to help you out, sir. Sandeep Jain sir says you did super for small industries and business, sir. It's great to get motivation from customers, from business owners like you. This is uh, our goal. This is what we achieve to do every day with My Bill Book. Um, प्रदीप जैन सेज ऑनलाइन स्टोर को अपडेट कीजिए, ऑर्डर टाइम पेमेंट करने का ऑप्शन होना चाहिए। राइट, तो सर हमारा जो भी ऑनलाइन स्टोर है वो कैसे चलता है कि जब भी कोई पार्टी आपके पास एक ऑर्डर प्लेस करती है तो वो एक कोटेशन बनता है और फिर आपके पास वो फाइनल चॉइस होता है कि क्या मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। तो हमने देखा बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कस्टमर्स के साथ आपका एक रिलेशन होता है जहाँ पे आप कुछ कस्टमर्स को बहुत सालों से जानते हैं और कुछ कस्टमर्स नहीं होते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है, मतलब हमने बिज़नेस ओनर से बात की जो हमें बताते हैं कि जो पुराने कस्टमर होते हैं उनको उन्हें प्रेफ़रेंस देनी होती है। तो उस केस में इट हेल्प्स अगर जो भी ऑर्डर्स ऑनलाइन स्टोर पे आएँगे वो कोटेशन के फॉर्म में आएँगे। तो उससे क्या होता है, जो बिज़नेस ओनर है यानी कि जो आप हो, आपके पास फाइनल कॉल रहता है कि मैं किसे सेल करना चाहता हूँ और मैं किसे सेल नहीं कर पाऊँगा। तो फॉर दैट रीज़न हमने ऑनलाइन स्टोर पे सेल्स इनवॉइस बनाने का ऑप्शन नहीं दिया है, बट हमने कोटेशन बनाने का ऑप्शन दिया ताकि फिर आप फाइनली जाके उसे कन्वर्ट करें सेल्स इनवॉइस में और वो ट्रांजैक्शन पूरा करें। क्योंकि वो कोटेशन में हो रहा है इसलिए सर हम वहाँ पे भी पेमेंट नहीं ले रहे, बट इस टाइप की हमें रिक्वेस्ट आ रही है सर और हम ज़रूर इसके बारे में सोच रहे हैं। Kidzi1633 has a question that goes, why cannot we have live tracking included for delivery guy? So sir, I understand you're using our premium version, which is why you probably have a delivery guy added to your My BillBook account. Great to see that, sir. So sir, at this moment in time, we don't have a live tracking feature, but what I would definitely recommend to you is you try out the live tracking feature in WhatsApp. So what you can do is you can ask your delivery boy to send you his live location in WhatsApp, and that live location stays active for about 8 hours. So what you can do with that is whenever your delivery boy is outside
making a delivery, you can see his live location on your WhatsApp, and you will be able to know कि आपका लड़का कहाँ तक पहुँचा है, how far he is gone and how many deliveries he's made. So that is definitely something that you can try right now, sir. But we don't have that feature in My BillBook at the moment. Mm, 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 mm. मुझे बस 1 मिनट दीजिए, काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए तो मैं एक एक करके सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा. राइट. Right. So Shaji Panchali ji has a question that goes, how to conduct physical audit on my inventory and check on shortages, excess stock and adjust to the current audit. तो इनका सवाल है कि इनको इनकी इन्वेंट्री में एक फिजिकल ऑडिट करना है और इनको चेक करना है कि शॉर्टेजेस या एक्सेस स्टॉक है क्या. तो हम क्या बताते हैं हमारे बिजनेस ओनर्स को कि आप क्या करिए, आप सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट माई बिल बुक की करिए, और यू मैनेज ऑल ऑफ योर इन्वेंट्री ऑन माई बिल बुक. And at the end of the day, or let's say at the end of 3 days, whenever you do your normal inventory check, you do a physical inventory check and try to match it with my bill book, and then you will be able to figure out if there is anything that's missing. So normally we've seen business owners क्या करते हैं, they write it down on a piece of paper, and then they use that piece of paper and then they do a physical check and they reconcile if it matches or not, कि क्या कम ज़्यादा हो रहा है क्या कहीं. तो आप क्या करिए, फिजिकल पेपर की जगह माई विल बुक के कर लीजिए, ताकि क्या है वो आपको पेपर संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स से आपका गोडाउन वाला बंदा रात को सारा इन्वेंट्री चेक करता है और आप तभी घर पे होते हैं, आप शॉप में नहीं होते हैं. तो उस केस में क्या होगा, आप बस उसको माई बिल बुक का एक्सेस दे दीजिए, एंड ही विल बी एबल टू चेक व्हाट द एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन द इन्वॉइसेस दैट यू मेड, बेस्ड ऑन द स्टॉक एडजस्टमेंट्स दैट यू मेड, एंड ऑन बेसिस दैट ही विल चेक कि फिजिकल इन्वेंट्री मैच करती है क्या. तो सर ऐसे आप फिजिकल ऑडिट कर लीजिए और आप उसको माई बिल बुक के साथ टैली करिए, एज अपोज टू किताब के साथ या पेन एंड पेपर के साथ टैली करने के. वरना टेक्निकल सेज व्हाट इज़ इन्वेंट्री. तो सर इन्वेंट्री बेसिकली आपका स्टॉक है. हम देखते हैं कि बिज़नेस ओनर्स हमेशा ट्रैक रखते हैं कि अगर मैंने 10 यूनिट्स मंगाए लेट्स से पार्ले जी के बिस्किट के, और मैंने 4 बेचे, तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे 6 बचे हैं ना, और वो जो 6 है वो ख़राब तो नहीं हो गए, उनकी कंडीशन अच्छी है ना. तो कभी कभी ऐसा होता है राइट कि कुछ इन्वॉइसेस आप बनाना भूल जाते हैं, तो तभी स्टॉक मैच नहीं होता, और फिर जब आप सेल कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इस महीने की सेल कितनी हुई, तो तभी वो डिफरेंस दिख जाता है. या जैसे कभी कभी थेफ्ट के चांसेस होते हैं, या कभी कभी आपका स्टॉक ख़राब हो जाता है. तो उन सारी चीज़ों के लिए हम इनकरेज करते हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज करें, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपके पास कितना स्टॉक है, आपको कब नया स्टॉक मंगाना चाहिए, आपके कौन से आइटम्स फास्ट बिक रहे हैं और आपको कौन से आइटम्स को स्टॉक करने की ज़रूरत है. So Ranjit Matha asks, why in print borders come? So sir, there are a couple of different themes that we have in our invoices. I'll just quickly show you in invoice settings and in change invoice format. So depending on the theme that you choose, you may or may not get borders. So this is the stylish theme where you will see that there are no borders. There are just dividers which sort of divide different aspects of your bill. Let's say you take the GST bill, so you'll see the GST bill is like a very structured bill where there are borders and everything is put inside boxes. If you scroll to the right, you can also see other formats like this. This is format modern, so there are no borders here. It's like a completely open format, and it has a lot of free space. So our idea with having multiple formats is to give business owners like you the chance to choose the kind of invoice that suits them. So we understand that for every business, their invoice is essentially a way to present themselves, a way to market themselves, because it has your logo and it's essentially a formal business document. So we want business owners to have that choice to express themselves the way they want. So you can choose any format that you want. We have very rigid formats with a lot of borders like GST. You can also try something like GST A5 if you print on half-sized paper. You can also try something like stylish, which is our most popular, or you can also try something like modern, which is very free, doesn't have borders. So I would definitely recommend, sir, that you try out all of these themes. mm, Football gear says please update delivery guy options. Sir, so currently I'll just quickly show how you can see what options your staff has. So in settings, go to manage staff, and in manage staff I'll just quickly add a staff member, right? So when you go to add staff member, you see an option that says click here to view all permissions.
If you click on it, you will be able to see what permissions each staff member has. So let's say I go to delivery boy. So sir, right now we have this set of permissions for delivery boy. If there is anything that you want changed, if there's anything that you think doesn't fit with your business, sir, please let us know. You can specifically tell us कि delivery boy को sales voucher का access दे दो, या give delivery boy access to stock adjustment, and then we'll try to incorporate that in the app. But sir, please do tell us exactly what changes you need. Hmm. Right. Jigar Pratap says, have PC supportable software? Yes, sir, 100%. We have a डेस्कटॉप वर्जन फॉर माई बिल बुक. आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पर भी माई बिल बुक चला सकते हैं. तो लेट्स से यू हैव अ कंप्यूटर इन योर शॉप, आपके शॉप में कंप्यूटर हो, तो आप वहाँ से भी माई बिल बुक का डेटा एक्सेस कर सकते हैं. व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट माई बिल बुक्स डेस्कटॉप ऐप इज़ इट इज़ कम्प्लीटली सिंक्ड विथ योर मोबाइल ऐप. तो मेरा इससे मतलब क्या है कि लेट्स से आप अपनी शॉप में बैठे हैं और लेट्स से आपका सेल्समैन फील्ड पे इन्वॉइसेस बना रहा है. तो द मोमेंट योर सेल्समैन मेक्स एन इन्वॉइस ऑन द फील्ड, because of real-time sync, you will be able to see that invoice in your shop on your computer in MyBillBook. So I'll just show you how you can sort of log in and access the desktop version. So right next to your company name, you will see this monitor icon. So just tap on this monitor icon and it will tell you how you can connect to the computer. तो आपको करना क्या होगा कि आप इधर इस वेबसाइट पे जाइए, www मतलब https mybillbook.in. ठीक है. अगर आप इस पे जाते तो वहाँ पर आप अपने फ़ोन नंबर से और OTP से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कनेक्ट प्रेस करिए और वो आपको QR कोड से लॉगिन करने का ऑप्शन देगा. So you can use either these options, and the My BillBook desktop app, it can be used on your desktop, on your laptop, or the very good thing about that is it has the same features or even more features than the mobile app. So all those things that you can do on the mobile app, आप जो भी चीज़ें मोबाइल ऐप पे करते हैं, all of those things you can also do on the desktop app. So that way it becomes like an extension of your business. Let's say आप ज़्यादा कंफर्टेबल है कंप्यूटर में बिजनेस करने में, यू आर मोर कंफर्टेबल विथ यूजिंग अ पीसी फॉर योर बिजनेस ट्रांजैक्शन, सो यू कैन डेफिनेटली यूज माई बिल बुक्स डेस्कटॉप ऐप. Okay, moving ahead. Tekuchi says, sir, we need some permissions to be edited for salespersons. Sir, just as I have shown previously, we have an entire chart that shows what permissions a salesperson has, what he can view, what he can create, what he can delete. So if you want any such changes, sir, please let us know specifically what changes you need. Like let's say you want to give your salesperson the option to delete any of the vouchers he's made. So please tell us specifically what you need. We'll definitely try to work on it going ahead. Um, लिंटो अनिल कह रहे भाई सब कुछ अच्छा लगा, मगर एक क्वेश्चन है सर. बढ़िया है कि आपको हमारा ऐप अच्छा लग रहा है सर. जो भी आपको सवाल है निश्चिंत पूछिए. BTS video has a question that goes offline available. So sir, we do have some offline features. So what you can do is whenever you want to create an invoice, right, you can create that even if you're offline. So we've talked to a lot of customers who tell us कि उनके पास internet connection तो है, but let's say for 10 minutes in a day they lose their internet connection. And if you have a customer in your shop at that time, uh, because you don't have internet, you won't be able to make that bill on my bill book. So to ensure that this doesn't happen, so that our business owners can constantly keep billing and they don't have to worry about the internet connection that they have, we allow you to make bills even when you're offline. So it will show that your bill has been created offline, and whenever you get internet connection, it gets synced. But you definitely have the ability, the option to create offline bills in My Bill Book. गौरव शर्मा का एक सवाल है सर, MRP का टोटल कैसे आ सकता है फाइनल बिल पर, क्योंकि मुझे लास्ट में बिल में प्रिंट लेना है कि यू हैव सेव दिस अमाउंट, राइट. सो सर, आपकी जो रिक्वेस्ट है ये काफ़ी कॉमन रिक्वेस्ट है. मैं काफ़ी सारे रिटेलर से ऐसी रिक्वेस्ट आती है जो कहते हैं कि वो MRP से कम प्राइस पे बेच रहे हैं और इसलिए उनको बताना है उनके कस्टमर को, देखिए कि आपने इतने आइटम्स खरीदे जिनका MRP ये था और हमने आपको कम रेट पे बेचा, इसलिए आपकी 200 रुपये की सेविंग हुई है. तो प्लीज़ आप हमारे साथ वापस शॉपिंग करिए क्योंकि हम आपको 200 रुपये की सेविंग दे रहे हैं. तो देर आर कपल ऑफ वेज यू कैन डू दिस सर. आप एक तो ये कर सकते हैं कि आप जब बिल बना रहे हैं ना, लेट्स से मैं दीप नाम की इस पार्टी के साथ बिल बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आईफोन ऐड कर दिया, ठीक है. अब मैं इसको एडिट करूँगा और मैं यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज दे दूँगा. तो मैं ओरिजिनल प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं डिस्काउंट परसेंटेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैंने 5% डिस्काउंट दे दिया आईफोन पे, ठीक है. और लेट्स से मैं ब्रिटानिया केक्स भी बेच रहा हूँ, उसको भी मैं एडिट कर लेता हूँ और उसमें मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूँ और मैं इसको डन कर रहा हूँ.
तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आईफोन पे और ब्रिटानिया केक्स पे डिस्काउंट दिया था 5% और 10% का, और नीचे टोटल डिस्काउंट अमाउंट आ गया। तो आप इधर ऐसे करके दिखा सकते हैं कि जो आपकी इन्वॉइस है उस पर टोटल अमाउंट कितनी है और टोटल डिस्काउंट कितना है। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने देखा है काफ़ी बिजनेस क्या करते हैं, वो स्पेसिफिकली लिखते हैं कि आपकी सेविंग्स इतनी हुई है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाइए और ऐड फील्ड्स टू इन्वॉइस पे प्रेस करिए और यहाँ पे अपनी एक नई फील्ड बना लीजिए जो होगा सेविंग्स। ठीक है, अब आपने सेविंग्स वाली फील्ड बना ली तो ये आपके फॉर्म में यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं टी पार्टी के साथ कुछ आइटम्स ऐड करता हूँ, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ कि मैं प्राइसेस थोड़े कम कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैंने 47,000 की जगह इसको कर दिया 45,000। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्राइस चेंज किया और मुझे दिखाना है कि मैंने आपकी सेविंग्स करवाई है। तो आप करिए, आप ऐड मोर डिटेल्स पे प्रेस करिए। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जाकर आप सेविंग्स में 2000 लिख दीजिए, जो भी आपने सेविंग कराई होगी वो, और आप इसको सेव कर दीजिए। तो अब हो क्या है, आपने बिल बनाया है आईफोन का, जहाँ पे आईफोन की प्राइस है 45,000 और आपने ऊपर लिखा भी है कि आपकी सेविंग्स हुई 2000 रुपीज़ की। तो ऐसे करके आप खुद से ये दिखा सकते हैं आपकी इन्वॉइस में आपके कस्टमर्स को कि उनकी कितनी सेविंग हो रही है आपके साथ शॉप करके। हम्म, ठीक है, अरुण राज इज अ क्वेश्चन दैट गोस, प्लीज ऐड द व्हीकल नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द स्टेटमेंट। राइट, सो सर, by vehicle number I understand that you want to see in your reports which vehicle number was responsible for how many of the sales and how much unit was sold, right? So I'll go back to our report analysis statement option, and let's say I go to, let's say, sales summary, or sales summary doesn't have units, so let's go to item sales summary, right? So what we have in item sales summary is only the number of units that are sold. Right now we don't have a report which allows you to see, जो भी आप additional fields बनाते हैं, how those reports for those additional fields look. So we've seen a lot of business owners add additional fields like which area this party lies in, and then they want to see what the sales is for that particular area, or how does the sale differ from this area to another area. Similarly, you want to add vehicle number and see how the sales for different vehicle numbers is different. Right now at this moment in time, sir, we don't have such a feature, but please stay tuned with us. Going forward, we'll definitely add something like this in our reports. We understand that once you have the initial bills on My BillBook, it becomes very important to see reports on top of that data, see how you can use this data to do your business better. The way I understand you would use is it कि आपके पास let's say 4 vehicles है जो सेल कर रहे हैं, and you want to see which is the vehicle with the least amount of sale, and then you can sort of decide if you still want to continue with that driver or with that vehicle, so that you can optimize your business further, so that you can increase your profits. So that's definitely something that we understand is a very important requirement for all businesses, and going forward we'll definitely introduce something like this on My BillBook. Okay, moving ahead, Mohanraj Parushetty has a question that goes, sir, if we have the same product name but different companies, how to sell while creating voucher and same product with different weight, like 50 grams. So sir, what we would recommend is that you create separate items for those. Now what I mean by that is, let's say so you mentioned that it's the same product name but it either has different companies or it has a different size, right? um, let's say I want to sell something like bananas, okay, right, this is a banana, and let's say you also want to add like which brand this banana comes from. So let's say there's a banana that's sold to you by a company called Garden, okay. Now in this case what I would recommend is that you add the company's name to the item name itself, and then you go ahead and add the sales price and you save it. Let's say I want to create so that's my new item. Let's say I want to create another item that's also banana, but that's sold to me by a different company. So you can just call it something like banana, and let me just call the company Nestle, okay. And if I add the sales price of 45, yeah, and then I save it. So what I'd recommend is कि you create separate items for both.
for your banana that's sold to you by Garden and for the banana that's sold to you by Nestle. And what you can do with this is you can create separate reports for both of these items. You can manage inventory separately for both of these items. Similarly, if you want to keep track of what the size is, like let's say you want to keep track of 50 grams, 100 grams, so we'd recommend that you create a separate item for those, so that now you can keep check कि जो मेरे पास 50 ग्राम्स के आइटम्स है वो कितने बचे हैं और हाउ मेनी आइटम्स डू आई हैव लेफ्ट फॉर 100 ग्राम्स. Right. So Sandeep Tiwari sir has a question that goes, is there a way we can do inventory using HST or through scanning? So sir, I'm not sure what you mean by HST. Please let us know in the comments, or if you can call our support number, you can chat with us there. Even that's cool. Through scanning से sir, we do allow you to create invoices with scanning. तो जैसे retail shops में होता है right कि you have a scanner gun, a barcode gun, and you just scan whatever items come at the counter, and then that gets added to the invoice, and then you just create the invoice and the inventory gets updated automatically. So that is something that we do have. So let's say I press on bill slash invoice and I try to add items here. So you will see an option here that's a scanner, right? I tap on it and the scanner opens. So for this, what you'll have to do is you'll have to add a barcode to your items. Just quickly show how you can do that. Go to items and go to this item iPhone. Go to edit and inside other. Wait. Right. So first you'll have to go to settings and you'll have to switch on scan barcode. Okay. And right, if you go to stock you'll find an option that says barcode. So either you can generate a barcode for this, and then you can print it and then you can stick it on the item, or you can just scan the barcode here. And what this does is, let's say आपके पास कोई item आता है which already has a barcode, so when you're creating that item just scan the barcode, and whenever you're making a bill, my bill book will remember the barcode for you and you just have to scan it and my bill book will figure out कि ठीक है this is item X or this is item iPhone 8 plus, and that gets added to your bill automatically. So that's definitely something that you can do, sir. mm, Mainframe sysprog has a question that goes, we buy items in bulk and then package it in small packagings, right? So sir, what you can do, if let's say you buy in one unit and you sell in another unit, and those units are different, what you can do is you can add separate units. I'll just show you what I mean. Like let's say let's just take the iPhone example only, right? So let's say I buy iPhones in boxes, okay, and let's say one box has three iPhones, let's say four iPhones, and I sell it separately as one piece. So what you can do is you can set how you want to create those units. Now what I mean by that is, let's say okay, I'll just take a new item. So currently we don't allow you to create new units or change units once an item has been added to an invoice, but that's okay. I'll just take a different item. Okay, so I'm just going to add a unit that says box, right? So I've added this unit called box, and I'm going to add an alternate unit that is pieces. Okay, right? And let's say one box has four pieces of iPhones. I click on done and then I save it. So what you can do with this is, whenever you create an invoice, right, we will let you choose yeah, this is my item. Whenever I add this item to my invoice, I can choose if I want to sell it in boxes or in pieces. So with this you can manage, let's say you have purchases that come in boxes but sales that you want to do in pieces. So my bill book will do the conversion for you. My bill book will manage the inventory for you. You just have to create these units, boxes and pieces, and the conversion factor between them when you create an item. But once you do that, going forward you can manage your inventory very well. mm, Pramod Singh has a question that goes, sir, please update for medical service. In bill, there is no option for drug license. Right, so sir, we don't have an option for drug license, but what you can do is you can add it yourself. तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे ऐड कर सकते हैं. तो मैं इस इन्वॉइस को डिस्कार्ड कर लेता हूँ और मैं एक नई इन्वॉइस बनाता हूँ, ठीक है. और मैं यहाँ पे नई इन्वॉइस बनाता हूँ, मैं टॉप पे सेटिंग्स पे प्रेस करता हूँ, and here you will find an option that says add fields to invoice. Press on that option
and here you can add whatever field you want to add to your invoice. So this is where we let businesses customize their invoice as per their needs. We've seen a lot of businesses जो car rental में काम करते, they want to write down who the driver was, or they want to write down which car was used for this particular service. So all of these things that are specific to your business, जो आपके business के specific होती है, you can customize those in your invoice so that your invoice will look exactly how your business requires it. तो जैसे आपका केस है कि आपको यहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर लिखना है, तो आप यहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर के लिए एक फील्ड बना दीजिए. वी ऑल्सो सीन कि जैसे ड्रग लाइसेंस नंबर के बारे में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि यू ऑल्सो वांट टू राइट योर ड्रग लाइसेंस नंबर एंड द पार्टीज ड्रग लाइसेंस नंबर. सो इन दिस केस यू कैन जस्ट राइट डाउन समथिंग लाइक माई ड्रग लाइसेंस नंबर एंड यू कैन ऐड अ डिफॉल्ट ड्रग लाइसेंस नंबर जो भी आपका नंबर है, ठीक है. एंड यू कैन क्रिएट एन एडिशनल फील्ड फॉर लाइक पार्टी ड्रग लाइसेंस नंबर, राइट, पार्टी ड्रग license, right, and then don't create an additional default field here. So what this does is it creates two fields, and your own drug license number is already fed here. Whenever you're creating an invoice for the party, you can just add the party's drug license number, and then let me just, ठीक है, तो I'll just add a dummy drug license number for the party. I'll add some items also and I'll finish this bill. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे your drug license number is shown and the party's drug license number is also shown. So with this you can customize the invoice as per your requirements, as per your business. So sir, I would definitely recommend that you try this out. Right, so my frame Sysprog has a question that goes how to manage stock in such cases. तो सर दैट्स द ब्यूटी ऑफ माई बिल बुक, आपको स्टॉक मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होगी. आप जिस भी यूनिट में लेते हैं, आप जिस भी यूनिट में परचेज करते हैं, विच एवर यूनिट यू परचेज इन, लेट्स यू परचेज इन बॉक्सेज एंड यू सेल इन पीसेस, you don't have to manually check if if one box is equal to four pieces. You just have to set it once at the time you set alternate units for that item, and then you can do it as you normally do business. My billbook will take care of all of the inventory for you. Whenever you, let's say, order one box but then you only sell three pieces, the my billbook will show that one piece is still remaining. So all of those calculations you don't need to worry about. मतलब I understand कि when pen and paper पे business करते थे, तो at that time the onus of handling all of these intricacies was on the business owner, was on you. But that's what we're trying to achieve with My BillBook. We want business owners to worry less about these small things, so that My BillBook handles it for them, so that they can focus on running their business more smoothly. Mm, okay, Mohan Raj Parushetty has a question that goes, and what about change in MRP of same product? Then how to add? Right. Sir, just give me a minute. Right. So, sir, let's say let's say you want to have two products with the same MRP. So I understand the way this would work is either those products are very matlab, there's some fundamental difference between them. Just say if I have Parle-G which is for 5 rupees and Parle-G which is for 10 rupees, so the size is also different, right? So one is 25 grams wala Parle-G, the other is probably 50 grams wala Parle-G. In that case, so sir, you will have different items itself, different products. So you should create different items for them in My BillBook. Let's say, however, so 25 grams वाला Parle-G, right? The price for that changes. So the size is still the same. It's still a 25-gram Parle-G packet, but from being 5 rupees, it's now costing 7 rupees. So in that case, you can just change the MRP directly. Go to items and whatever item it is, you can just change the sales price directly. So another thing I'll mention is that the MRP is something we just use for showing in the invoice. We don't actually use it for calculations. So let's say you want to use a price that gets used in your calculations, in your profit and loss. So I would recommend that you use sales price for that. So let's say you're a retailer and the price of MRP and the MRP for, let's say, Parle-G changes, then you make the change in sales price, and that will change all of your calculations also. However, if this change in MRP is something that you want to tell your retailers, but you're a distributor, you're a wholesaler, in that case you can just add this MRP field and change it. It will only be a cosmetic change, matlab it won't change any of the calculations. So that's something that you can do. Mm, right. There's another question that goes, इजाज़ संगमेश्वरी जी का सवाल है, सर डिफरेंट परचेस रेट की वजह से प्रॉफिट निकालने में प्रॉब्लम होती है.
राइट सर, सो दिस इज़ सर, ये हमें दिक्कत काफ़ी बिजनेस ओनर्स ने बताई है कि वो जब परचेज़ करते हैं तो वो बैचेस में परचेज़ करते हैं। जैसे मैंने जो सितंबर में परचेज़ किया, सितंबर वाले बैच में, वो मैंने एक अलग रेट पे परचेज़ किया। अगर मैं कुछ दिसंबर में परचेज़ करता हूँ ना, तो वो अलग रेट पे परचेज़ करूँगा। तो अगर आप आइटम में जाकर परचेज़ रेट चेंज कर देंगे, तो उससे होगा क्या कि आपके पुराने परचेज़ रेट पे ओवरराइट हो जाएँगे, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफ़िट एंड लॉस कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो कपल ऑफ थिंग्स जो मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आप इनवॉइस बनाने के बाद आइटम का कोई भी रेट चेंज करते हैं, तो आपका इनवॉइस का रेट चेंज नहीं होता। तो आपको वो डरने की ज़रूरत नहीं कि आपकी पुरानी इनवॉइस का क्या होगा। एक बार आपकी इनवॉइस बन गई ना, तो आपको इनवॉइस एडिट करनी पड़ेगी उसमें चेंजेस करने के लिए। बट अगर आप लेट्स से इन्वेंट्री में चेंजेस करते हैं, तो डायरेक्टली इनवॉइस में चेंजेस नहीं होंगे पुराने वाले। ठीक है। अब रहती है अगर दूसरी बात कि आप अगर अलग अलग परचेज प्राइस यूज़ कर रहे हैं, तो सर एट दिस मोमेंट इन टाइम हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, हमने दो दो बना रखी है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ऐसी चलती है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एनालिसिस या रिपोर्ट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे दो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स हैं। जो पहली है ना, तो वो क्या करती है, वो सारे सेल की प्राइस गिन लेती है और सारे परचेस की प्राइस गिन लेती है, और उसको वो सब्ट्रैक्ट कर लेती है। तो उससे क्या होता है कि लेट्स से अगर आप कोई परचेस कर रहे थे और आपने परचेस वाउचर में उसकी प्राइस अपडेट कर ली एज़ पर दैट बैच, ठीक है, तो वो यहाँ पे करेक्टली रिफ्लेक्ट होगी कि यहाँ पे जो परचेस की अमाउंट है वहाँ पे आपकी उस बैच की प्राइस आ जाएगी। तो आप उस केस में इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। बस एक वर्ड ऑफ कॉशन कि हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो हमने देखा है काफ़ी बिजनेस ओनर्स कभी कभी उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप लेट्स से अलग अलग परचेस रेट्स पे कर रहे हैं परचेस, तो आप ये ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बस जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इन्फ्लुएंस होगा इस पर, वो आप चेक कर लीजिए। लेट्स से आप वो नहीं कर रहे, बट आप ये चाहते हैं कि आप बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखें। जैसे हम काफ़ी बिजनेस ओनर्स से मिलते हैं जो कहते हैं कि वो अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं, सेल प्राइस पे, और वो बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं कि जो मैंने बिल बनाया है, ये बिल में जो सेल्स प्राइस है वो कितनी है, और ये जो बिल के आइटम्स है वो उनकी परचेज प्राइस कितनी है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट से। तो ये आपको बताया कि उस बिल में आपने जो सेल्स प्राइस रखी थी वो कितनी है, और वो जो आइटम्स है उनकी इन्वेंट्री में या आइटम्स में जो परचेज प्राइस है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप परचेस अगर अलग रेट पे कर रहे हो तो आप वो नहीं देख पाएंगे, बट लेट्स से आप सेल अलग रेट पे कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे ज़रूर देख पाएंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा सर कि अगर आप अलग अलग परचेस रेट्स पे कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट यूज़ करिए। बस आपको वहाँ पे इन्वेंट्री का ख्याल रखना होगा। बट लेट्स से आप अलग अलग सेल रेट पे बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देख लीजिए। हम्म, ठीक है। हेमंत माली जी का सवाल है, सर कस्टमर पेमेंट करता है तो हमने हमारे ऐप में पेड करके ऑटो अपडेट नहीं होता है, राइट? तो सर अभी कैसे होता है, माई बिल बुक में ना आपको लिंक करना पड़ेगा आपका पेमेंट आपकी इनवॉइस के साथ। तो मैं बता दूँ इससे मेरा मतलब क्या है। तो मेरे सामने एक इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर 16, जो मैंने दीप नाम की पार्टी के साथ बनाई है। वो 1,02,000 की इनवॉइस है जो भी अनपेड है। अगर लेट्स से आप इस इनवॉइस के लिए कोई पेमेंट ले रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड रिसीव पेमेंट पे प्रेस करिए। तो वो क्या करेगा, वो इस इनवॉइस से लिंक करके एक पेमेंट वाउचर बनाएगा। आप अगर इसमें चाहे तो आप अमाउंट भी कम कर सकते हैं, जितनी भी आप अमाउंट कलेक्ट करना चाहे वो। मतलब लेट्स से मैं 1 लाख की जगह 50,000 कलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर आप सेव कर दीजिए। तो होगा क्या कि ये जो पेमेंट होगी ये आपके इस इनवॉइस से लिंक्ड होगी। सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि सॉरी आप देख सकते हैं कि आपकी जो इनवॉइस अमाउंट थी वो 1,02,000 थी। बट क्योंकि मैंने 50,000 की इनवॉइस का पेमेंट कर लिया है, तो मेरे पास 52,000 ही अनपेड है। तो ऐसे करके आप लिंक कर सकते हैं किसी भी पेमेंट को किसी भी इनवॉइस के साथ, और फिर वो अनपेड से पेड हो जाएगी। ठीक है। लेट्स से आपका ऐसा बिजनेस है कि आप 4 इनवॉइसेस बनाते हो, और फिर उसके बाद आप एक पेमेंट में सारी इनवॉइसेस निपटा लेते हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप रिसीव पेमेंट में प्रेस करिए, और आप वहाँ पे आपकी पार्टी ऐड करिए जिसके साथ भी आप कर रहे हो ट्रांजैक्शन। तो मैंने यहाँ पे दीप ऐड कर लिया, और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की मैंने भाई पेमेंट ले ली। अब मुझे ये मार्क करना होगा कि ये जो 5 लाख की पेमेंट है उनमें कौन सी इन्वॉइसेस मुझे सेटल करना है। तो मैं लिंक इन्वॉइसेस पर प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मुझे दिखेंगे दीप पार्टी के साथ बने हुए सारे मेरी इन्वॉइसेस जो अनपेड है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ मुझे कौन सी इन्वॉइसेस सेटल करनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी रिमेनिंग अमाउंट कैसे चेंज हो रही है जैसे जैसे आप इन्वॉइसेस सेटल करते हैं। ठीक है, अब मैंने अपनी अनपेड इन्वॉइसेस सेटल कर दी। मुझे वो बता रहा है 5 लाख में से इतनी अमाउंट रिमेनिंग है जो मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ, और आप उसे सेव कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग इन्वॉइसेस हैं उनको आप सेटल कर सकते हैं। तो मैं दोहरा देता हूँ, आपको जब भी पेमेंट कर रहा है तभी आप बस उसको इन्वॉइस से लिंक कर लीजिए।
अगर आप एक ही इन्वॉइस के साथ पेमेंट ले रहे हो तो आप इन्वॉइस के कार्ड के नीचे जो ऐड रिसीव पेमेंट का ऑप्शन होता है आप उस पर प्रेस करिए। अगर आपको मल्टीपल इन्वॉइसेस को सेटल करना है एक ही पेमेंट के साथ, तो आप सर उसे रिसीव पेमेंट से कर लीजिए। एक्चुअली हमारे पास और काफ़ी सारे सवाल हैं और वी विल आंसर देम ऑफलाइन। Right now, since we're at the end of our 1 hour duration, I'll quickly announce who the winners are so that all of our participants who are eagerly waiting for the winners, they can know if they've won or not. So I'll just quickly announce the name of the winners. Hmm, ठीक है। तो मेरे विनर्स अनाउंस करने के पहले मैं सारे दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूँगा दैट दे स्टेड विद अस फॉर 1 hour, दैट दे आस्क्ड ऑल ऑफ देयर क्वेश्चंस एंड दे एंगेज्ड विद अस। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू फाइंड वैल्यू इन माई बिल बुक। दैट इज़ आवर मोटिवेशन हियर कि जो इंडियन बिजनेसेस है, जो हमारे देश के एसएमईज है, उनको जो बिलिंग की, जो इन्वेंट्री की छोटी मोटी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े, वो माई बिल बुक आपके लिए हैंडल कर लेगा। आप अपना बिजनेस बनाने पे फोकस करिए। तो इट्स ग्रेट टू हियर सर कि आप सब माई बिल बुक यूज़ कर रहे हैं और इससे आपके बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है। जो भी आपकी सवाल है जो हम आज आंसर नहीं कर पाए, विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इन द कमेंट्स। So please stay tuned with us, keep asking us all of your questions, and we'll also be meeting around this time next week also. So before we go, I'll quickly announce our contest winners. So we have three contest winners for this week. Their names are Jyoti Tiwari, SK चंदन एंड दिनेश कपूर। तो मैं एक बार नाम दोहरा देता हूँ हमारे इस हफ्ते के कॉन्टेस्ट विनर्स का। ज्योति तिवारी, SK चंदन और दिनेश कपूर। तो सर आप प्लीज़ हमारे फेसबुक चैनल पे हमें रीच आउट करिए, आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए और हम आपको आपका गिफ्ट भेज देंगे। ग्रेट दैट ऑल ऑफ यू गाइस कुड जॉइन अस। वील बी मीटिंग at this time only, Wednesday 2:30 next week. So see you at that time. Bye.